हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज 13th ऑफ February 2024। मैं बैठा हूँ अपना लाइब्रेरी में और सामने अपना फ्रेंच डोर थोड़ा खोल दिया हूँ, तो आउटसाइड नॉइज थोड़ा आ सकता है। प्लीज डोंट माइंड दैट। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्लोबल मैक्रो। ग्लोबल मैक्रो जो मेरा प्लेलिस्ट है, ये वीडियो उसका पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन डिस्कशन करेंगे आज का जो डेटा, यूएस इन्फ्लेशन और उसके साथ फेडरल रिजर्व। तो चलिए स्क्रीन शेयरिंग पे चलते हैं। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, आई थिंक ये यस। सॉरी, लिटिल बिट लेट हो गया थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए, मैक्रो माइक्रो में मैं आया हूँ। उससे पहले चलिए आप लोगों को लेके चलता हूँ ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में कैलेंडर में जाइए। ये एवरीडे का हैबिट है इन्फ्ले एक ट्रेडर का, जो फॉरेक्स ट्रेडर होगा। उसमें पहला जो इम्पोर्टेंट डेटा था आज का, जो आ चुका ऑलरेडी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूके का। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज फॉलन। दिस इज रिलेटिवली जीबीपी पॉजिटिव। अर्निंग्स आर डाउन। दिस इज जीबीपी नेगेटिव। Average earnings are down, but not significantly, marginally GBP negative. So two data marginally GBP negative, and two data we have positive. One is this employment change, which increased, employment increased, and unemployment rate has fallen. So job markets can still be said to be quite solid. So overall, it is a neutral kind of data for GBP. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आज का, दैट इज द यूएस का कोर इन्फ्लेशन। इस ये जो डेटा है, इसका इम्पैक्ट विल ग्रेजुअली बी फेल्ट अक्रॉस द एसेट क्लास। सारे एसेट क्लास में ग्रेजुअली इसका रिपल इफेक्ट होगा। ये मच मोर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा कंपेयर टू द यूके का जो अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आया है। क्योंकि अपना जो फेडरल रिजर्व है, जो यूएस का सेंट्रल बैंक, जो कंट्रोल करता है यूएस पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, जो, और वो पॉलिसी इंटरेस्ट रेट इन्फ्लुएंस करता है यूएस गवर्नमेंट का बोरोइंग कॉस्ट। और यूएस गवर्नमेंट का बोरोइंग कॉस्ट अफेक्ट द ग्लोबल बोरोइंग कॉस्ट, बिकॉज वी लिव इन अ डॉलर बेस्ड इकोनॉमी। और वो इकोनॉमी में फेडरल रिजर्व एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। एंड इट हैज ब्रॉडली दो मैंडेट है उसका। वन इज प्राइस स्टेबिलिटी, जो डिफाइन किया गया है 2% इन्फ्लेशन। तो फेडरल रिजर्व ये जो कोर इन्फ्लेशन है 3.9%, इट विल डेफिनेटली वांट दिस इन्फ्लेशन टू ड्रॉप टुवर्ड्स 2%. And also the headline inflation, which is volatile, that is Fed definitely, this is actually the policy target. This definitely they want 2%, but core inflation, they want to move towards the downward trajectory. तो अब चलिए ए में मैक्रो माइक्रो में चलते हैं। ए में मैक्रो माइक्रो में आज का 7 बजे है यूएस सीपीआई डेटा, इंडिया टाइम। और यहां पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हटा दिया इसको। अब हमें दिख रहा है कि ओवरऑल द पेस ऑफ द फॉल, ये जो स्टेडी पेस था फॉल का, जिसमें ओवरऑल बिल्ट हुआ कि इंटरेस्ट रेट कट होगा, फेड ओपनड अप, द कोर इन्फ्लेशन हैज एक्चुअली स्टॉप्ड डिक्लाइनिंग, इट इज स्टेबिलाइजिंग along with जो हेडलाइन इन्फ्लेशन, मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है ब्लैक लाइन, this is stabilizing, and core inflation which was falling is once again a bit of stabilizing. This is one of the reason कि Federal Reserve is still talking hawkish, not ready to cut interest rate. Despite market कभी कभी सिग्नल दे रहा है with a bear steepening of the bond market कि शायद ज्यादा हो गया ओवरऑल।
but still this level of inflation Fed के hands को tight रख रहे हैं. They were not able to cut interest rate. और इसके साथ साथ लेट्स गो टू यूएस बिजनेस साइकिल. फेड का इंटरेस्ट रेट कट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये देखिए बिजनेस साइकिल का जो इंडिकेटर हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. सो इट इज क्वाइट क्लियर दैट द लीडिंग इंडेक्स इज स्टेडीली गोइंग लोअर. जो रिमार्केबल हुआ है कि यूजुअली दिस काइंड ऑफ फॉल, इसका दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ चेंज. So this is the way इस बार का behavior is very different from other times. Look how sharp the Conference Board leading economics index or the blue line has fallen. This kind of fall has historically coincided with a major market crash and a recession in the United States. US dollar based system में हम लोग हैं. So US recession is very important. हर बार up to this level, but so far अभी तक we have not seen the kind of what we call usual recession. We have not seen yet. उस रिसेशन का जो मॉडल है, उस मॉडल में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है दिस फेडरल रिजर्व, जो मैं अपने क्लास में डिस्कस करता हूं. यू होप यू आर ऑल अवेयर ऑफ दिट. जो लोग भी मेरे क्लास किए हैं सीसीएमटी का. दिस इज द इलान मार्केट. जो लोग नहीं जानते, इलान मार्केट्स के वेबसाइट में आप मेरे नाम टाइप करेंगे. दिस इज द पार्ट ऑफ द कोर्स वी डिस्कस एंड दिस इज माय ट्रेडिंग सेटअप. So basically what we are getting at, this is the business cycle indicator is still moving lower. Majority times as this, not majority, every time it has seen this kind of fall, we ended with a recession and a major market crash. It has always been just a matter of time. So this kind of fall, this is a percentage, same chart, just percentage change from a year ago. This kind of fall, this level, where the index have been, has historically brought a recession and a crash in the market, जो अभी तक हम लोग नहीं देख पा रहे. और वो मॉडल में फेडरल रिजर्व का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. As long as Federal Reserve does not cut the interest rate, the cycle usually do not end. So the Federal Reserve का interest rate cut बहुत ही important है. Market, let's go to now central banks under topics. टॉपिक के अंदर सेंट्रल बैंक के अंदर फेडरल रिजर्व. प्रीवियस जो मैंने वीडियो किया था, वी हैव सीन दैट मार्केट वाज प्रोजेक्टिंग 150 basis points rate cut from Federal Reserve this year. Fed has steadily pushed back that it's not going to cut interest rates so fast as the market expects. I have clearly said somebody is wrong here, either the Fed or the market. So market is now backtracking. It is no longer expecting 150. It is now expecting 125. But ये भी काफी big है. Whereas Fed project कर रहा है, it will do 50, and market is projecting that Fed will have to do 125. Significant mismatch. If this goes up further, expectation falls for rate cut, this is not going to be good news for equity market. Not necessarily bad news. We'll have to see how the interest rate curve is behaving based on the expectations. अगर हम लोग एक bear steepening of the yield curve देख रहे हैं, that will be very bearish for the equity market and it will be as dollar positive. So not necessarily immediately as this gets cut, the market will go for a major down move, but this is not going to be a positive news for the market, number one.
Second is to end the business cycle, we need the Federal Reserve interest rate cut, preferably 2 interest rate cut. So market is now not only projecting now 1 interest rate cut, first one will be in May. It is no longer projecting June rate cut. The next one it is projecting will be in the next August meeting. So after August, once the 2 rate cuts are done, I will personally be very careful that historically we will be very close to the end of the business cycle vantage moment. तो फेडरल रिजर्व का कंटिन्यूअस वॉच आई विल कीप अ चेक ऑन कि क्या चल क्या रहा है ओवरऑल, और वो एक्सपेक्टेशन में आज का जो डेटा है दिस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर कोर इन्फ्लेशन रिमेन्स हाई then it will be expected that Fed will remain in keep interest rates higher for longer and market may retrace its expectations further. If the inflation declines significantly, if we see a drop towards mainly the core inflation towards 3.5% or preferably lower, then we can further see rate cut expectations once again coming back to the March, or the probability of rate cut in the May will likely to go up. So this is the interest rate perspective of the inflation. अब अगर interest rate moves based on the inflation outcome, अगर interest rate goes on the higher side, dollar will receive an increased bid. It will be a higher interest rate will ultimately could be a dollar positive and equity negative event in the short term. But we need ultimately the Federal Reserve interest rate cut for the business cycle to end. So that's all from my side. Thank you, friends, for watching. All the best to your trading. I hope this macroeconomic discussion also helps you. आपका knowledge या इसमें enrich हो रहा है. So all the best to you and happy trading.